Good morning, dear student. Myself Amit Tripathi from Subhasun Children Academy, Argopur Kalan. Guys, you are welcome in my class. Guys, in the science portion, there are 5 chapters which is related to the basically physics, and that 5 chapters I will taught you. And the name of these 5 chapters, the first is motion, second is force and law of motion, third is gravitation, fourth is work and energy, and fifth one is the sound. Guys, these are the 5 chapters जो हम आपको पढ़ाएंगे. ये 5 चैप्टर, फर्स्ट है मोशन, सेकंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड इज द ग्रेविटेशन, फोर्थ इज द वर्क एंड एनर्जी, एंड फिफ्थ इज द साउंड. ओके, तो फर्स्ट हम आज स्टार्ट करेंगे मोशन. और मोशन क्या होता है? बेसिकली देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, बट इन योर class, that means in 9th standard, we have learned only the rectilinear motion, that means straight line motion. Okay, before starting the chapter, first chapter motion, I want to define what is the physics. Is the definition of physics is here. Physics is the branch of science in which we study the basic laws of nature and they are happening in different natural phenomena. What is the basic laws of nature? Guys, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हैपनिंग्स आपके डेली लाइफ में या जनरली आप देखते हैं. उन सब के पीछे कहीं ना कहीं फिजिक्स है. उसी की स्टडी, वो क्यों, उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ऐसा क्यों हो रहा है आपके नेचर में, उन सब की स्टडी हम जिस साइंस की ब्रांच में करते हैं उसी को हम बोलते हैं फिजिक्स. ओके, जैसे अगर कोई ट्रीज़ हैं, फ्रूट उसमें से टूट के गिरता है तो नीचे ही गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता. ठीक है. रेनबो का फॉर्मेशन, जब आपके सन राइजेस होता है और सनसेट होता है तो दोनों टाइम उसका कलर रेड होता है और उसके बीच में मिड पीरियड में उसका कलर डिफरेंट होता है. ठीक है. तो ये कुछ ऐसे डिफरेंट नेचुरल फिनोमेनास हैं जिनकी स्टडी हम करते हैं और उस ब्रांच का नाम है दैट इज़ द physics. Okay, then we are now start your syllabus, and the first chapter, that is according to NCERT, that is the chapter number 9, and name of that chapter, that is the motion. Before starting the chapter motion, I want to tell you some important point related to which we will use in this chapter, like that physical quantities, vector quantities, scalar quantities, what is the magnitude, what is the reference point. These are 4 points that you will use in this chapter. So first I want to discuss what is these point. Okay, now the topic is physical quantity. What is the physical quantity or how you define it? Every measurable quantity is known as the physical quantity. Definition of this: every measurable quantity is known as physical quantity. Physical quantity. Example, like that, जो measure the length आपका measurement करते हैं, that means length. Length is the physical quantity. Area, mass, okay, speed, etc. ऐसे ही और डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं जो आप
मेजरमेंट करने में यूज करते हैं, जिसका मेजरमेंट आप करते हैं, दैट क्वांटिटीज आर नोन एज द physical quantities. There are two types of physical quantities. The first one is the scalar quantities and second one is the vector quantities. What is the meaning of scalar quantity? Scalar quantity, that means a such type of physical quantity, a such type of physical quantity which have only magnitude that quantity is known as the scalar quantity. Example, what is the example? That means length, okay, mass, clear, time. These are the scalar quantity. लेंथ इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर. मास इसकी यूनिट होगी किलोग्राम. टाइम जिसकी यूनिट होगी सेकेंड. क्लियर? तो इनकी ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा. जैसे अभी आपने लेंथ का मेजरमेंट किया, सपोज दैट आपने मेजरमेंट किया दिस इज 1 किलोमीटर. क्लियर? मास का मेजरमेंट किया 2 किलोग्राम. टाइम का मेजरमेंट किया 2 आवर्स. They have no direction but it have only magnitude. That's why these quantities are known as the scalar quantities. Okay, then what is the vector quantities? Vector quantities, that means a such type of physical quantities, a such type of physical quantity which have magnitude and direction. That means वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होंगे, एंड इन स्केलर क्वांटिटी इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन. क्लियर? द क्वांटिटी which have magnitude as well as direction, that is known as the vector quantity. What is the example? इसका example आप देखेंगे तो example आप जिस that is the velocity, displacement, okay, momentum, एक्सेट्रा. क्लियर? तो ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, ये सब आपकी जो है वो हैं वेक्टर क्वांटिटीज़. और कैसे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं इसका जब हम अभी लेटर डिस्कस करेंगे वेलोसिटी का, उसमें आपको पता चलेगा. ओके गाइस, नेक्स्ट एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड. गाइस द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द मैग्नीट्यूड. व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड? अभी आपने वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटीज़ का स्टडी किया है. इन स्केलर क्वांटिटीज़ द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली द मैग्नीट्यूड, एंड आपने मेजरमेंट किया था लेंथ, मास, टाइम. ठीक है? तो लेंथ का मेजरमेंट किया, सपोज दैट लेंथ का मेजरमेंट किया और लेंथ की वैल्यू है दैट इज 3 मीटर. क्लियर? दिस 3, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस मेजर्ड क्वांटिटी is known as the magnitude of that quantity. Okay, that means the numerical value of measured quantity is called magnitude of that physical quantity. Okay, for example, if you measure the length
if you measure the length that is 5 meter, here 5 is magnitude and meter is unit of length. Clear? Similarly, suppose that you measure the time, that is 5 seconds, that means 5 is the magnitude of the time and second is the unit of the time. Okay, I hope this is the clear for all. आप सबको ये समझ में आ रहा होगा. And next point, that is the reference point. This is the important point to understand the motion of any object. What is the reference point? Before starting or before discussing, before defining the reference point, I take some example which you will use in your daily life. Suppose that similarly अगर हम यहाँ पे अपने आप को देखें, अगर हम ये बोलें I am in the left side of the board. I am in the left side of the board. मैं बोर्ड के लेफ्ट साइड में हूँ. What is the meaning? What is the meaning? किसके रिस्पेक्ट में किसकी पोजीशन को हम डिफाइन कर रहे हैं? ठीक है, तो लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड, लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड कौन है? मैं हूँ. अपनी पोजीशन को डिफाइन कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड. दैट मीन्स बोर्ड इज द रेफरेंस पॉइंट. अपने एक पोजीशन, सेल्फ की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मैंने एक रेफरेंस पॉइंट को चूज किया, एक पॉइंट को लोकेट किया, एक पॉइंट को चूज किया, दैट इज द बोर्ड. और इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को मैंने डिफाइन किया है, आई एम लेफ्ट साइड ऑफ दिस बोर्ड. दैट मीन्स बोर्ड इज द रेफरेंस पॉइंट एंड आई एम द ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स आई एम द लोकेशन ऑफ सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड. ओके, सपोज दैट आप अपने घरों का एड्रेस जब देते होंगे तो घरों में आप एड्रेस देते हैं तो बोलते हैं कि पेट्रोल पंप के आगे राइट हैंड साइड में जो गली गई है उससे 200 मीटर आप आगे जाएंगे तो एक बोर्ड वहाँ पे आप बोलते हैं कि हाउस नंबर दिस, सेक्टर नंबर दिस करके वहाँ पे आप पहुँच जाइएगा. क्लियर? तो लोकेशन किसकी आप डिफाइन कर रहे हैं? लोकेशन आप अपने होम की डिफाइन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? पेट्रोल पंप से. दैट मीन्स पेट्रोल पंप इज द योर रेफरेंस पॉइंट. ओके, दैट मीन्स टू डिफाइनिंग, टू लोकेटिंग the position or location of any object, you have a specific point. That point is known as the reference point and it is also called the origin. Okay, clear guys? तो define करते हैं what is the reference point. To defining the location or position, to defining the position or location of any object, we need a specific point. That point is called reference point. Okay, it is also known as the origin. It is also called origin. Okay, clear? To defining or locating the position of any object, we need a specific point. That point is known as the reference point or it is also known as the origin. Clear guys? अब इसके रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करेंगे what is the motion and what is the rest. There are many types of motion, but in your syllabus you have learned only one type, that is the rectilinear motion, that means straight line motion. Okay, so I will going to start your chapter, that is the motion and what is the motion. Guys, motion, तो motion को define करना with respect to reference point. That means if any object will change your position with respect to a
reference point, then you can say the object is in motion. And if will not change your position or if will not change your location with respect to a reference point, then you say the object is in not in motion, that means this is in rest position. Clear? So we define motion. An object is said to be in motion if it change your position with respect to a reference point. Okay? Example, suppose that this is your house, this is the road. ओके ये आपका होम है, ठीक, और आप यहाँ पे हैं, आप अपने होम के पास खड़े हैं। ओके गाइस, ये आप यहाँ से कोई कार आपको दिखी, ये कार टैक्सी जो मूव कर रही है इस रोड पे इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया किसी पॉइंट किसी टाइम इंटरवल पे, दैट मीन्स उसकी पोजीशन क्या है ए। फिर आपने उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व किया, पोजीशन उसको क्या मिल रही है, इसकी पोजीशन मिल रही है बी। फर्स्ट इसकी लोकेशन थी ए, देन इसकी लोकेशन हो गई बी। फिर आपने फिर ऑब्जर्व किया इसकी पोजीशन मिल रही है सी। क्लियर? तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं किसकी पोजीशन, द पोजीशन ऑफ द कार। एट ए टाइम यू विल ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ ए कार इज एट ए, द पोजीशन ऑफ ए कार इज बी, एंड आफ्टर some interval of time the position of car is C. Who observe, in which respect you define the position of car? You will define the position of the car with respect this boys, that means इसके respect में आप कार की पोजीशन को लोकेट कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस बॉय इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस बॉय दैट मीन्स दिस गाइज इज द रेफरेंस पॉइंट, एंड कार इट will change your position with respect to this boy, that means with respect to this reference point. That's why you are able to say the car is in motion. Okay, that means जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को लोकेट करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करेंगे, दैट लोकेटिंग पॉइंट, दैट मीन्स दैट ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज नोन एज द रेफरेंस पॉइंट। और अगर इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज, that means you can say the object is in motion. Clear? And what is the rest? What is the rest? How you define the rest? Similarly, simple, object is said to be in rest position if it will not change your position with respect to a reference point. That means similarly same definition आपकी होगी, जहाँ पे आपने motion use किया वहाँ पे आप use करेंगे rest if it will not change your position with respect to reference point. With respect to reference point, the object is said to be in rest position. Okay, a object is said to be in rest position if the object will not change your position with respect to reference point. That means अगर हम इसी एग्जांपल को चेंज करें, अगर ये बॉय
एक पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहा है, पोजीशन ऑफ द कार दैट इज ए, आफ्टर टी इंटरवल ऑफ टाइम फिर इसने ऑब्जर्व किया द पोजीशन ऑफ कार इज सेम एज लाइक ए, एंड आफ्टर देन it will also observe the position of car as the same position that is A, then you can say the car is in rest position with respect to this voice. Okay, and if will the position of the car will change A, then B, and then C, then you can say the car will move with respect to a reference point, that means with respect to a this voice. Okay, that means this is the simple definition of the rest position. Then we discuss what is the types of motion, that means how many types of motion. Basically there are three types: rectilinear motions, circulatory motions, and the oscillatory motions. Okay, on the basis of path we defined the types of motion. The first one is the linear motion. First is linear motion, second is rotatory motion, and third is oscillatory motion. Okay, what is the linear motion? If the particle move from one point to another point on a path of straight line or a curved path, that type of motion is known as the linear motion. Okay, that means if the object will move in a straight line path, then it is said to be in rectilinear or straight line motion, and if it will move on a curved path, then it is said to be curvilinear motion. Okay, example of straight line motion, that means motion of a train, motion of a car at a straight route, and motion of a ball on the ground. These are the example of straight line motion or rectilinear motion. Motion of the train, motion of the car on the straight route, and motion of the ball on the ground. These are the example of rectilinear motion or straight line motion. Then what is the curvilinear motion? The motion of the ball in a space. Okay, that are the zigzag motion of any object. That is the example of curvilinear motion. Clear? Next one is the what is the rotatory motions. Rotatory motions, if the object will rotate about its own axis, that type of motion is known as the rotatory motion. Motion of the object about its own axis. This is the rotatory motions. Example, rotation of the earth about its axis. Axis, suppose that अगर हम ये सपोज करें ये आपका अर्थ है और अर्थ रोटेट कर रहा है, तो ये देखिए अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, तो इसका मोशन इस तरीके से होगा, इस तरीके से ये रोटेट करेगा.
ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। आपने टॉप देखा होगा जिसको बोलते हैं लट्टू, उसको आपने देखा होगा, उसका जो रोटेशन होता है उसको भी हम बोलते हैं रोटेटरी मोशंस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल मोशन ऑफ टॉप, मोशन ऑफ अर्थ about on axis. These are the example of rotatory motion. And what is the oscillatory motion? Oscillatory motion, when a body will move to and fro from its mean position. To and fro, that means mean position, ये इसकी हो गई। अगर ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, दैट मीन्स मीन पोजीशन के इस साइड और इस साइड अगर ऐसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशंस। द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशंस इज द मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक। क्लॉक का पेंडुलम आपने देखा होगा, उसका मोशन इस तरीके से होता है। दिस मोशन इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ स्विम, जिसको झूला बोलते हैं, झूले का भी मोशन मीन पोजीशन के इधर उधर होता है। ठीक है, मोशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ गिटार, जब आप गिटार को आप स्ट्रम करते हैं, उसको बजाने के लिए आप उस पर रफ करते हैं, तो उसका भी जो मोशन होता है टू एंड फ्रो होता है, इसको वाइब्रेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो फ्रॉम its mean position, that type of motion is said to be oscillatory motions. Example, motion of pendulum of clock. Okay, second is motion of string of guitar. Clear? These are the example of oscillatory motions. Guys, तो हमको जो पढ़ना है अपने सिलेबस में वो पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मोशन, दैट इज द रेक्टिलिनियर मोशन। ओके।